ओके एवरीवन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट इन रिलेशन टू ड्यूटीज. ठीक है. अब ये जो ड्यूटी है ना, बहुत ही सुपर है. यू कैन सी द डायग्राम हियर, कंप्लीट डायग्राम आई एम शोइंग. बहुत ही अच्छा ड्यूटी, अच्छे से समझना इसको एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली हाउ दिस वर्क्स. ठीक है. इसको हम बोलते हैं ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. तो यहां पे मेन इसका ऐसे सबसेक्शन लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी? सी, यू ओनली टेल मी व्हाट इज द राइट वे टू गो अहेड. ठीक है ना. कल ही आप ही सोचना, अगर सपोज कंपनी का एजीएम हो चुका इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द ऑडिटर नोटिस सम फ्रॉड. ठीक है. अब आप बोल रहे हो कि ऑडिटर अभी शेयर होल्डर्स को बताएगा अगले एजीएम में, विच विल बी मे बी नेक्स्ट ईयर जुलाई. सो जुलाई में एजीएम हो गया, अक्टूबर में फ्रॉड हो गया, ऑडिटर केम टू नो अबाउट द फ्रॉड, बट नाउ ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स इन हिज ऑडिट रिपोर्ट मे बी जस्ट बिफोर नेक्स्ट एजीएम इन जुलाई. सो यू अंडर डोंट यू थिंक इट इज टू लेट टू इन्फॉर्म? क्योंकि अभी जिसने फ्रॉड किया है वो तो पैसा लेके भाग गया, उसने तो अगले दूसरे कंट्री में तो नया अपना घर बना दिया. यहाँ पे उसने he has found a new place to live. He is living a luxurious life, and in the end the person who has done the fraud has become successful. So in order to catch hold of the fraud as early as possible, the government has to bring a subsection or a law where the person who is finding, okay, there is a fraud in place, the auditor who finds, oh, there is a fraud, he is able to inform to the central government as early as possible. क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक आप जल्दी फ्रॉड को पकड़ोगे कैसे? हाउ विल यू कैच होल्ड ऑफ सच पर्सन्स? So you understand, in this way the government has gotten a new subsection called as subsection number 12. मैं न्यू बोल रहा हूं क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में ये नहीं था. सो 2013 में दे गॉट कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 12, और उसमें भी बाद में एक अमेंडमेंट हुआ. आई टेल यू अबाउट द अमेंडमेंट, वेट फॉर इट. तो अब क्या हुआ यहां पे? दे हैव सेड हियर, प्लीज सी हियर, अंडरस्टैंड विद मी. द ऑडिटर, दिस इज द ऑडिटर in the course of performance, if he has reasons to believe that, so in the course of his performance as the auditor has reason to believe that there is an offense involving or expected to involve fraud of 1 crore or more. ऐसे लग रहा है कि there can be a fraud of 1 crore or more. Offense which involves or is expected to involve a fraud of 1 crore or more. तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि 1 करोड़ या उसके ऊपर से फ्रॉड हो सकता है यहां पे, देन द ऑडिटर, if the answer to this question is yes, if the amount of fraud is 1 crore or more as per the auditor will take this line of action and the auditor will forward his report within 2 days of his knowledge. Within 2 days of his knowledge. If by chance within 2 days of his knowledge is not there in your notes, then please add it there. उधर लिख देना वहां पे, forward his report within 2 days of his knowledge to the board or the audit committee. So auditor will send it to the board or the audit committee. So कंपनी में audit committee कब होगा? Remember when we did rule 3, वो केक पे कॉल वाला आंसर, that time we saw audit committee कब होगा? For L pot 10, 50, 100 companies, all listed companies, all unlisted public companies having paid a capital of 10 crores or more, all unlisted public companies having outstanding loans, borrowings, debentures, deposits. Remember LBDD O के अंदर लिखा था, loans, borrowings, debenture, deposits of more than 50 crores or any unlisted public company having turnover of 100 crores or more. For these companies, audit committee will be there. But if audit committee is not there, then the auditor will send this report to the board or the audit committee. अब ये बोर्ड और ऑडिट कमेटी क्या करेगी यहां पे? दे विल हैव टू गिव रिप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ऑडिटर ने जो रिपोर्ट भेजा है, दे हैव टू गिव द रिप्लाई विद इन हाउ मेनी डेज? दे हैव टू गिव देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन विद इन 45 days. How many days they have to give? Within 45 days. So 45 days ends here. This circle which is given here, that is 45 days. So they have to give their reply within 45 days. Simple. अब यहां पे रिप्लाई क्यों चाहते हैं हम बोर्ड ऑडिट कमेटी से? सी, व्हेन यू आर टेलिंग देम, सी आपकी कंपनी में गड़बड़ हुआ है, तो कंपनी की मैनेजमेंट कौन है? बोर्ड, या तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए ऑडिट कमिटी इज द ऑडिट कमिटी. So we are just telling them, please you do inquiry within your company and give us a reply. We want to know, इतना झोल हो गया कंपनी में आपके, 1 करोड़ या मोर का फ्रॉड है, please tell us where is the problem. So you will wait for their reply for how many days? Within 45 days. Okay. अब यहां पे दो चीज हो सकती है. पहले,
उन्होंने रिप्लाई दे दिया विद इन 45 डेज. सो दैट इज दिस लाइन विच यू सी, जो मैंने ऑरेंज में वो जिग लाइन जा रहा है वो वाला. So if they give their reply within 45 days, then the auditor, as soon as he receives it, auditor will send some documents to the central government. Auditor will send the auditor's report, that is nothing but this report, okay. Auditor will send the auditor's report. Auditor will give the reply of the board or the audit committee also along with that. Plus auditor will give his comments on their reply within 15 days to CG. So auditor will give his comments on the reply given by the board or the audit committee. This also he will add, and he will give all these three things: auditor's report, reply of the board or the audit committee, and auditor's comments on the board or audit committee's reply. This three things he will give it to CG within how many days? 15 days, whenever the auditor receives it. So from whenever he has received it within 15 days. तो यहां पे एक गलती मत करना जो स्टूडेंट्स करते हैं. यहां पे ऐसे मत बोलना कि ओके सर, सो वी हैव टू जस्ट डू 45 डेज प्लस 15 डेज, सो बेसिकली वी हैव टू गिव इट टू सीजी विद इन 60 डेज. नहीं नहीं नहीं, गलत. अगर यहां पे रिप्लाई मिला है, यहां पे रिप्लाई मिला है, and let's say this is the 40th day, let's say the auditor gets the reply within 40th day, so it will be 40 plus 15. Let's say the board or the audit committee has replied within, let's say, 5 days only, so it will be 5 days के अंदर auditor को reply मिल गया, and auditor now has to inform CG within how many days? Within 15 days. Very easy to understand this. Comfortable? Sir, what if no reply is given? So आइए वो भी देखते हैं. If no reply is given within 45 days, if no reply is given within 45 days, so ये वाला category आ गया यहाँ पे. So in that case, the auditor will send his audit report. Auditor will send his audit report. Plus, he will give a note containing the fact that his report for which no reply was received from the board or the audit committee. So auditor CG को बताएगा, देखो मैंने तो उनको audit report दिया था, but they did not give me a reply within 45 days on my audit report. They have not given me a reply. So auditor will write a note saying that, see, I had sent the audit report and so date, 45 days gets over on this day. I received no reply from the board or the audit committee. You please look into the matter. Like that, the auditor will inform the central government. So now you understand how this plays out. First, the yellow area is common. Then it can either be the orange path or it can be the green path, as I showed you. Simple. अब यहाँ पे यू आर डायरेक्टिंग एवरीथिंग टू सीजी. सो यहाँ पे एक तो बात समझ में आ गई कि सर whenever the amount is 1 crore or more, after the auditor gives his report to the board or the audit committee, whether the board or audit committee replies or not, in both the cases the matter will go to CG. Comfortable? If they give a reply, the orange path. If they don't give a reply, the green path. Very simple. Easy. आगे बढ़ते हैं. सर सीजी में हम किसको देंगे सर ये? टू whom should we send it? Can you send a Facebook message to मोदी जी? मोदी जी देखिए ऐसा चल रहा हमारे देश में, आप कुछ कीजिए यहाँ पे. Can you send like that? The answer is no. So you understand here कि एक प्रोसीजर होता है. तो उन्होंने बोला यहाँ पे what the procedure exactly is. ये प्रोसीजर को ना हम ना इमेजिन करेंगे and then we'll do it one by one. ठीक है? ये प्रोसीजर जानने के पहले you should know a code and then that procedure will be easier. And that code is called LAXIM. यहाँ पे आप देखोगे LAXIM करके, LAXIM. So LAXIM देख लेते क्या क्या है यहाँ पे. लेटर हेड. So हम सीजी को जब इन्फॉर्म करेंगे it will be in the letter head of our firm. हम एड्रेस मेंशन करेंगे हमारा, our postal address and email address, basically ऑफिस का एड्रेस and email address. We'll mention our contact number. So if someone from the central government wants to get in touch with us, we'll give our contact number. We'll also put our signature over there. We'll also provide the seal of the auditor. हमारा signature, और अगर auditor के पास कुछ stamp रहेगा तो auditor can put that also. And we'll provide our ICAI membership number. We'll provide our ICAI membership number as a CA. Simple to understand this, okay? ये वाला जो law है ना, it also applies to CS and cost accountant also. So if cost accountant finds a fraud, can they also use this 143 subsection number 12? The answer is yes. So in that case, membership number for cost accountant will not be ICAI's number. It will be ICMAI's number. CAs come under ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. But cost accountants come under ICMAI, Institute of Cost and Management Accountants of India. तो उनका भी जो membership number रहेगा, that they will mention here.
सिंपल। तो देखते हैं यहां पे कैसा आएगा। सो व्हाट इज लैक्सिम डिटेल्स? वेरी सिंपल, द लेटर हेड ऑफ द सीए फॉर्म, their postal address and email address you have to mention, contact number of the CA, the signature of the CA, the seal of the auditor, and finally the membership number. All these things we will mention here. कंफर्टेबल, नो इश्यूज। अब इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ये किस तरीके से भेजना है। तो नाउ कम टू द स्टोरी पार्ट विद मी। देखो ध्यान से सुनना। इमेजिन करना कि वी हैव टेकन एन एनवलप, ठीक है, और एनवलप के अंदर हमने 3 डॉक्यूमेंट्स डाले, 3 चीजें डाली। पहले इन द एनवलप वी पुट अ फॉर्म कॉल्ड ADT4. So whenever we report fraud, we will inform in form ADT4. We'll inform in form ADT4. Simple. ADT1 क्या था? What is ADT1? 1 1 है ना, ये 1 है ना, it looks like an I, no, it looks like an I, ठीक है ना, लेटर I दिखता ही है। तो here you will say whenever the auditor is appointed, the company will inform ROC within 15 days by filling form ADT1, by filling form ADT1. Simple, clear? ADT2 क्या है? Whenever the company has to remove the auditor, the board of directors will pass a board resolution, correct? And then the board of directors will make an application to CG, inform ADT2 along with the fees. CG में कितने letters है? C and G, correct? No, C and G. So 2 letters. So with 2, remember, making an application to CG for removing the auditor of the company. Simple. So 2 से याद आएगा, ADT2 से CG. Simple to remember this. 83 से क्या आएगा यहाँ पे? 3 से याद रखो फ्री। ऑडिटर हो गया फ्री। फ्री क्यों हुआ? बिकॉज ऑडिटर हैज रिजाइंड। अगर कोई इंसान रिजाइन करता है तो फ्री हो गया। अभी यहाँ पे खुला पंछी हो गया। यहाँ पे ही कैन इजीली फ्लाई वेयर एवर ही वांट्स। सो यू अंडरस्टैंड व्हेन द ऑडिटर इज फ्री because he has resigned, he will fill form ADT3. So for resignation, because of which he will become free, for that the auditor will fill form ADT3. So 3 और free याद रखो, और free से resignation याद रखो, याद रहेगा ये, डोंट वरी। और 4 से याद रखना fraud, fraud। तो अपन बोलेंगे forward। So 4 से आएगा forward, easy। So whenever the auditor informs CG, he will inform in form ADT4 that there is some fraud in the company of 1 crore or more. Simple to understand this, okay? तो ये आएगा ADT4। तो अभी चलो इमेजिन करते हैं, सुनो। We took an envelope, उसमें हमने पहले फॉर्म फिल किया ADT4, उसको एनवेलप के अंदर डाला। सेकेंड, तो ये हो गया पहला चीज एनवेलप के अंदर। दूसरा, वी पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द एनवेलप, or we put this information in the envelope, whatever is the case. If the board or the audit committee has given a reply, then the above part. If they are not given the reply, then the below part. Correct? No. इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? इंफॉर्मेशन। सो वील पुट ADT4, देन वील पुट द इंफॉर्मेशन, देन वील पुट द लैक्सिम डिटेल्स। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे लिए 2। दिस और दिस, दोनों में से कोई एक। So we'll put 1, 2, 3. 1, 2, 3 मतलब क्या आ गया? ADT4, information and lexim details we'll put inside the envelope. Then we will seal the envelope. Seal करेंगे envelope के cover को. So what are we doing? We are putting all these things in a sealed cover. Sealed cover में डाल दिया। अब sealed cover के ऊपर we'll write the address of Secretary, Ministry of Corporate Affairs. So you cannot send it to Modi ji. You will send it to the Secretary in the Ministry of Corporate Affairs, that is MCA, Secretary MCA. अभी उनका अपने नाम लिख दिया, एड्रेस वड्रेस सब लिख दिया दिल्ली का। Then what we will do is we will go to the post office and we will go to the post office and do registered post acknowledgement due or speed post. Registered post acknowledgement due एक type of posting है where जब उनके पास रिसीव हो जाएगा, दैट टाइम द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड द पोस्ट ही विल टेक इन राइटिंग दैट दे हैव रिसीव्ड इट। ठीक है ना? जैसे कुरियर वाले घर पे हमारे जब कुरियर देते हैं, सो द कुरियर वाला टेक्स अ सिग्नेचर नो ऑन ऑफ योर्स, दैट इज द सेम ओनली रजिस्टर, दैट ही इज टेकिंग एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड इट। तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और वी कैन सेंड इट बाय स्पीड पोस्ट। सो ये दोनों मेथड दिया हुआ है।
प्लस इसे इमेजिन करना कि जैसे हम पोस्ट ऑफिस में गए, वी डिड आरपीएडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और वी डिड स्पीड पोस्ट। हम फटाफट घर पे भाग के आए, लैपटॉप खोला, एंड वी सेंट एन ईमेल टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टेलिंग देम दैट वी हैव सेंट सच अ पोस्ट। सो दिस इज बेसिकली वी आर डूइंग ईमेल फॉर कंफर्मेशन, वी आर डूइंग ईमेल फॉर कंफर्मेशन। कंफर्टेबल? बोले स्टोरी स्टार्टिंग से क्या करेंगे, पहले विल टेक एन एनवलप, उसमें तीन चीज आएगा। बोलो पहले क्या जाएगा, फॉर्म एडीटी 4, बाद में क्या जाएगा, योर इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड व्हाट विल गो, द लैक्सिम डिटेल्स। ये डालने के बाद वी विल सील द कवर, विल राइट द एड्रेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड देन वी विल गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड वी विल सेंड द पोस्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बाय एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट, and then we'll come back home quickly and send email for confirmation purpose। कंफर्टेबल है? ठीक है। ये सब कब रहेगा, पूरा जो कलर हो गया ये कब हुआ है, जब the value is 1 crore or more। So when we feel that there is an offense involving or expected to involve fraud of 1 crore or more, then we'll go in this path, entire area which I showed you। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता, everyone please see here। Sir, what if the value is less than 1 crore? So I'm asking whether the offense involving or expected to involve fraud of less than 1 crore agar rahega, it means is it 1 crore or more? The answer is no, it means it is less than 1 crore। So the auditor here also has to forward his report within 2 days of his knowledge to the board or the audit committee। But now understand, board or the audit committee, they have to mention in the board's report regarding this matter। तो जब भी next board's report आएगा, whenever we have to give the board's report, whenever, normally it is given before, just before the AGM, so that something called as annual report is given, and annual report के अंदर auditor का report, board का report, ये सब होता है। So it is given just before the AGM। So the board or the audit committee will give disclosure in the board's report, they will disclose in the board's report regarding this matter कि there is a fraud which occurred in the company of, let's say, less than 1 crore, let's say the amount is 80 lakh rupees, then in that case they will give disclosure in board's report। अब बोर्ड और ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट देने की जरूरत क्यों है? बिकॉज द लॉ मेकर्स हैव मेड द लॉ इन अ वेरी सुपर्ब मैनर। व्हाट दे सेड इज, सी, अगर यहां पे फ्रॉड का अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, then the auditor will mention about this amount in the audit report। So auditor का जब report आएगा तब auditor mention करेगा कि we applied the procedures given in 143 subsection number 12, we saw that there is a fraud of less than 1 crore, so we are giving here the details of fraud, and in the audit report the auditor will mention the nature of fraud, amount involved and parties involved। ऑर्डर क्या क्या डिटेल्स देगा यहाँ पे, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट्स इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, ऑल दीज डिटेल्स ऑडिटर विल मेंशन। अभी इमेजिन करो इफ यू आर द शेयर होल्डर एंड व्हेन यू सी द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यू सी अरे कंपनी में 80 लाख का झोल हुआ है, यहाँ पे 80 लाख का देयर इज अ फ्रॉड। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल क्विकली गो टू द board's report and see what reply the board of directors have given, and that is where the board of directors will disclose। So what will the board of directors disclose in their report? Because auditor has already mentioned in his report the nature of fraud, amount involved, parties involved। nature of fraud, employee has done embezzlement, employee ने चोरी की है यहाँ पे, amount is 80 lakhs, parties involved, employee name so and so, so and so, so and so persons। Yeah, even if not mentioning the persons, then you can mention the employee working in this category or this branch of the company। Now if they have given these details, then you understand the board of directors have to disclose in the board's report, what they have to disclose, the remedial action taken, कि उन्होंने क्या एक्शन लिया यहाँ पे। So the board of directors have to mention NAP details, that is nothing but this nature of fraud, amount involved, parties involved, NAP details, plus they have to also provide the remedial action taken। What remedial action have they taken, उन्होंने इस चीज का ठीक कैसे किया ये मैटर को। So they can write there, we set up an inquiry committee gave its report in 1.5 months, and after that we came to know that so and so employees were guilty, so we have reported the matter to the police, the employees were asked to resign from the company। All these things they will mention in the remedial action taken। Comfortable? Easy? Clear? That completes this area, that completes your this part। ठीक है। अब यहां पे you need to understand everything in a very clear cut, जैसे दिया हुआ है वैसा को समझना है इसको,
ज्यादा स्ट्रेस लेनी नहीं है इसमें. यू हैव टू जस्ट एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग द चार्ट वेरी वेल. ये जो चार्ट है, दिस इज मेड बाय मी. इट इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन, एंड दिस हार्ड वर्क हैज गॉन ओनली फॉर यू. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू नो द चार्ट परफेक्टली वेल. ओके, दैट कंप्लीट्स दिस एरिया. अभी इसमें ना दो और पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना. अगर यहां पे एवरीवन प्लीज सी हियर, अगर यहां पे let's say auditor thought that there is a fraud of 1.2 crores, तो ऑडिटर ने ये रास्ता चुन लिया, करेक्ट, बिकॉज द अमाउंट इज 1 crore और मोर. द ऑडिटर ये रास्ता चुन लिया. लेट्स से दे गेव अ रिप्लाई एंड वी इन्फॉर्म्ड द सीजी, सो वी टुक दिस रूट, और ये सब अपन ने किया. नाउ द सीजी इज हैविंग द मैटर. नाउ व्हेन सीजी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ऑडिटर को सडनली रियलाइज हुआ यहां पे, ओ माय गॉड, द अमाउंट इज नॉट 1.2 crore, द अमाउंट इज जस्ट 1.2 lakhs. ऑडिटर ने कुछ मिसकैलकुलेशन कर दिया यहां पे. तो ऑडिटर ने गलती से 1.2 करोड़ सोच के सीधा सीजी को इन्फॉर्म कर दिया यहां पे, बट द अमाउंट वाज जस्ट 1.2 lakhs. सो माय क्वेश्चन इज, शुड द ऑडिटर बी पनिश्ड? ऑडिटर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इधर मैं एक क्वेरी खाली सॉल्व करता हूं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो, बिकॉज व्हेन आई टीच इन द क्लास, स्टूडेंट्स कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए वो मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, व्हेन यू रिपोर्ट टू सीजी, नो दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी कॉन्फिडेंशियल. वो सीजी पब्लिक में इंफॉर्मेशन लाने देगा नहीं. So even if you have mentioned certain names of persons in the report to CG, CG will not disclose that information to the public, will not. So you understand here that is confidential only. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमने 1.2 करोड़ सोच के किसी का नाम लिखा होगा, अब वो पर्सन का वो बदनाम हो गया बेचारा, बट द अमाउंट वाज जस्ट 1.2 lakhs, तो सर हमने तो ऐसे ही किसी को बदनाम कर दिया ना सर, तो इट इज रॉन्ग. True, it is wrong, but the CG is not going to reveal that information. So don't think from that angle. But I'm just asking you, should the auditor be held guilty just because the auditor was incorrect? Tell me, should the auditor be held guilty? Bolo? The answer is no. Auditor will not be held guilty. Why? ऑडिटर को ये सेक्शन में क्या पावर मिला है कि अगर ऑडिटर को लगे दैट देयर इज अ offense involving fraud or expected to involve fraud. So if the auditor is having an opinion that there is an offense involving or expected to involve fraud of 1 crore or more, in that case the auditor will give a report to the central government. लेकिन यहां पे अपन ऑडिटर को ये टेस्ट कर रहे हैं कि ऑडिटर यहां पे तुरंत बता रहा है कि नहीं बता रहा. नाउ थिंक अबाउट दिस पर्सन हु अर्लियर थॉट दैट देयर इज अ फ्रॉड अमाउंट ऑफ 1.2 crores. ही इमीडिएटली टुक स्टेप्स, मेड अ रिपोर्ट, गिव इट टू बोर्ड और द ऑडिट कमिटी, गिव इट टू सीजी. ये सब वो इंसान ने कर दिया. बाद में पता चला कि यार अमाउंट वाज एक्चुअली लेस. सो डिड दिस पर्सन टेक क्विक एक्शन और नॉट? द आंसर इज यस. Will you blame him for taking quick action? No, because this is a case of fraud. As I told you, we don't want the person who has done the fraud to leave the country, enjoy his life outside. So did he take quick action? The answer is yes. The auditor took quick action. In this case, the auditor will not be held guilty because the auditor is working in good faith. ऑडिटर जैसे काम करना चाहिए वैसे कर रहा है, ठीक है. अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो गया, पहले उसको लगा 1.2 करोड़ से, बाद में पता चला 1.2 लाख से, कोई बात नहीं. लॉ इज टेलिंग दैट बिकॉज ही एक्टेड इन गुड फेथ, द ऑडिटर विल नॉट बी पेनलाइज्ड. ऑडिटर की कोई गलती होगी नहीं. सिंपल. ओके, यू टेल मी दिस. सी, व्हाट इज बेटर, द ऑडिटर इन्फॉर्मिंग द सीजी और नॉट इन्फॉर्मिंग द सीजी? व्हाट इज बेटर? इन्फॉर्मिंग द सीजी. अभी अगर उसमें कुछ गलती होती है तो हम ऑडिटर को माफ कर रहे हैं, लेकिन ऑडिटर ने अगर सीजी को इन्फॉर्म ही नहीं किया तो गलत है. इज द ऑडिटर, इमेजिन दिस सिचुएशन, द ऑडिटर नो देयर इज अ फ्रॉड ऑफ 1.2 crores एंड द ऑडिटर इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड नॉट इन्फॉर्मिंग सीजी. डोंट यू थिंक दैट इज वर्स? करेक्ट. तो अगर आपको पता है कि 1 crore और मोर के ऊपर फ्रॉड है एंड आपने सीजी को इन्फॉर्म किया नहीं, या तो फिर आपको पता है कि फ्रॉड इज लेस देन 1 crore और आपने जो ये सेकंड रूट है आपने वो फॉलो किया नहीं, दिस रूट विच वी फॉलोड, आपने वो फॉलो किया नहीं. In that case, you have not followed this section. Then for that, they have said here, the auditor has to pay a fine. In the case of listed companies, fine is 5 lakh rupees. If you are doing the audit of any other company, the fine is 1 lakh rupees. इस तरीके से दिया हुआ है. Simple. That good faith wala point, no, is section 143, subsection number 13. When you read it, you will get it. Don't worry. Comfortable till here, that is of 143, subsection number 12. And a chintu part of that good faith in subsection number 13, and this entire area is covered in a rule called rule 13. ठीक है, तो जो procedure है that is 143 subsection number 12 read with rule 13. Okay,
Simple, clear.